which book तो इसके लिए आज जो हम टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी. ओके, ऑलरेडी वी हैव सीन इन अ प्रीवियस लेक्चर्स वी हैड एन इंट्रोडक्शन टू द ओवरऑल syllabus, the overall units that were included in the syllabus, but today we'll discuss specifically about biotechnology, what things are included, what actually is biotechnology, how it is applied in pharmacy, what is the use for the mankind of using biotechnology or biotechnological principles in production of pharmaceuticals. Okay, so that we'll see today. Okay, what all is we will also see the definition of biotech and the various applications in different fields, what are the types of you can say applications, and what are the various fields where biotechnology is applied, that we'll see. Now for this I have referred Satyanarayan, और बीडी सिंह में भी इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से दिया हुआ है. डायरेक्टली आपका ये यूनिट ऐसा नहीं है, some more points are included, but today we'll only learn about a brief history, you can say, of biotechnology, how it evolved, and what were the major inventions that took place in history that were used for the benefit of mankind. Okay, so just we'll have an introduction to biotechnology. Now for this I have seen a presentation, a PowerPoint presentation. That is not my presentation, I have read it on SlideShare. That presentation I found very good, so I'll be sharing that presentation today with you, and we'll be discussing the applications of the biotechnology in various fields of medicine. Okay, so just wait a second. By the time, please everyone write P or present in the chat box along with your roll number. Are you able to see my screen? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? Some of you please unmute yourself and tell me whether you are able to see the screen, or just raise your hands, better. Okay, fine. So you can see here biotechnology, science, technology and society. Okay, this was the presentation that I read on this is available on SlideShare. If you want, I can share the link of SlideShare with you. Okay, or if you do not want, you can refer the books also. Better is you refer a book for studying your biotechnology. Okay, so what is biotechnology? It is this is the, you can say, the basics or the definition of definition जो book literal definition है, that also will try to memorize. ठीक है, मैं आपको learn करवा कर तो नहीं दे सकती हूँ, but will try to memorize it because you have to write it down. Okay, so it is basically the manipulation of living organisms or parts of living organisms to make products useful to humans. As I said, it is nothing but the manipulation or some modification. Here they are telling us manipulation. I will say it is a modification, some modification in the living organism, the entire living organism or the part of living organism, to make the product useful for humans. This is what is biotechnology. Okay, and what it deals with the manipulation of manipulation या modification, ठीक है, but किसका modification? It deals with the modification or manipulation of the genes of organisms to alter their behavior, characteristics or value. That means here modification or manipulation is done at the genetic level. Okay, then the cell and gene technology used to produce new characteristics in plants and animals. अब आपको ये पता होगा what happens अगर हमने genetical उसका जो genetic makeup है उसको modify किया तो क्या होगा. ठीक है, क्या होगा ये आपने 12th में आपके ऑलरेडी स्टडी किया है. जब आपको इसके जेनेटिक मटेरियल या उसके जेनेटिक लेवल तक जाके जीन्स उसके मॉडिफाई करते हो, आप सबको पता है, यू हैव वेल स्टडीड दिस इन योर इवन इन योर 10th 11th 12th, many times you must have studied
the genes, they have expression characteristics. ठीक है, they express certain some or the other characteristics. Each and every character that you see visually, हम हमारा ही example ले लो, whatever character you see in your human body, ठीक है, whatever characters you see in yourself, that is because of the genetic material you have. ठीक है, so each and every gene will have a specific character expressed. ठीक है, so what is done in biotechnology, how modification is done? Modification is done at the genetic level, and what happens due to this modification, we are getting some characteristics expressed by that modified gene, and we are modifying the gene in a particular fashion that whatever character is expressed by that gene, that is useful for us. So what we are actually doing, first we have to keep a focus ki suppose xyz character we want. Okay, suppose जैसे कि आप example ले लो वीड्स का, ठीक है, प्लांट्स का, क्रॉप्स का, सीरियल्स का, या फिर एनिमल्स का. तो वॉट एवर कैरेक्टरिस्टिक यू डिजायर, first you set in your mind, and now you go at the genetic level. What is the existing characteristic, ठीक है, एंड हाउ इट इज. जैसा कि आपने देखिए सोनोरा वगैरह पढ़ा है, जो वीट जो क्रॉप है उसके वराइटीज जेनेटिक उसके मॉडिफिकेशन करने के बाद जो रेवोल्यूशन आया है, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, दैट यू ऑल नो. तो ये किस वजह से आया? पहले देखा गया कि उसकी ईल्ड बहुत कम है वीट की, ठीक है, फिर उसमें ये स्टडी किया गया कि उसमें क्या प्रॉब्लम आते हैं, पेस्ट कैसे हो जाते हैं उसमें, सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कैसे हो जाता है. हमको कैरेक्टरिस्टिक वहां पर चाहिए था हायर ईल्ड, ठीक है. फिर उसके बाद जेनेटिक लेवल पर स्टडी हुआ विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईल्ड, नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईल्ड, द प्रॉपर कंडीशन, द प्रॉपर वराइटी ऑफ द वीट दैट वी वांट, ठीक है. तो ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन उसमें हुआ, एंड देन वी गॉट द जेनेटिकली मॉडिफाइड crop. So basically here the applications of biotechnology, or you can see अभी आगे हम term use करेंगे gene technology. Okay, so the cell and gene technology, either the cell will be modified or the gene will be modified. So the cell and gene technology is used for, where it is used to produce new characteristics or advanced characteristics in plants and animals. Okay. Now, these are the definitions. These are some of the selected definitions from various books. So you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so many definitions. Okay, any one definition you can refer, no problem. ठीक है, जो सत्यनारायण में दी है वो भी आप refer कर सकते हैं. Anyone you can refer. We just read one of the definition. It is the integrated use of biochemistry, microbiology, and engineering sciences in order to achieve टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कल्चर्ड टिश्यू सेल्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ. ठीक है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? इट इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड सम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और इंजीनियरिंग साइंसेज इन ऑर्डर टू अचीव द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम क्या मॉडिफाई करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं इसमें, कल्चर्ड टिश्यू सेल्स or any part thereof. ठीक है, and one definition is, it is a collective noun for the application of biological organisms, systems or processes to manufacturing employed in the service industries. Okay, so there are many definitions. Okay, you can just have a look in the book also for the definition. Now we'll just have a brief history how this biotechnology has evolved. Okay, see it 18,000 BCE, it started with the domestication of plants and animals. Then slowly the Egyptians, these are you can say the major inventions in the field of biotechnology and fermentation technology, both inclusive. Okay, so domestication of plants and animals. Then in 400 BC, Egyptians, they mastered the art of wine making. ठीक है, वाइन मेकिंग आपको पता है हाउ वाइन इज प्रोड्यूस, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ग्रेप जूस थ्रू फर्मेंटेशन. तो ये जो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, सो the Egyptians, they mastered the art of wine making. Then next in 2000 BC, the Egyptians used yeast
they used first time yeast to make bread. Now it is a well known microorganism. Yeast is Escherichia coli, E. coli. Okay, so these microorganisms are used to make bread. Okay, so abhi nowadays it is a common practice to use yeast in confectionaries. Okay, so it was first done by Egyptians. They used yeast to make bread. Then later on, the Egyptians and Sumerians learned brewing and cheese making. Okay. Then moldy soybean curds were used to treat boils. The next major inventions, the Greeks developed grafting techniques. Then powdered chrysanthemums. Then ये अगर आपको याद होगा, आपने 12th में पढ़ा होगा, the Robert Hooke described the structure of the first time he described the structure of the cell, and we came to know what is the actual content of a cell, and we came to know that the cell is the indivisible unit of a human body. Okay. The next, in 1675, Anton van Leeuwenhoek discovers protozoa and bacteria. The next, in 1797, Edward Jenner created the cowpox vaccine. Then in 1802, biology, the term biology first appears. Bios means life and logos means science. Okay. Then in 1830, proteins were discovered. ठीक है, सी यू कैन सी कि कहाँ कैसा कैसा स्टार्ट हुआ, व्हाट आर द मेजर इन्वेंशंस एंड वेयर वी आर नाउ. Okay, 1855 E. coli was discovered by Theodore. Then 1857 fermentation and germ theory. Will not go into detail of fermentation or germ theory, ये already आपने study किया है. Just to have a brush up, हम ये discuss कर रहे हैं. ठीक है, fermentation and germ theory. The next, in 1859 Charles Darwin, ये भी आपको पता है, published the theory of evolution. Then in 1861 Louis Pasteur develops pasteurization. Then in 1865 Gregor Mendel and laws of inheritance, Mendel's laws of inheritance जो आप पढ़ते आ रहे हो अभी तक. Then Heinrich William Gottfried discovered chromosome. अभी यहाँ से basically genetics ये start हुआ है. ठीक है, study of genes and genetic material, study of nucleic acids. The next, bacteriophages were discovered. You can see here the आप माइक्रोबायोलॉजी में देखिए कैसा डायग्राम देखते हो बैक्टीरियोफेज का. ठीक है, बेंजीन के जैसा उसका एक स्ट्रक्चर होता है नीचे ऐसे. So the bacteriophages were discovered in 1915. Then in 1919 biotechnology was introduced by Carolee Erecki. What is basically biotechnology? अभी तक के biology पता था. Then we came to know about the genes and the genetic material and the nucleic acids. Then proteins were discovered simultaneously, bacteriophages were discovered, and then the term biotechnology was coined. Then in 1922, Dr. Frederick Banting and Charles Best discovered insulin. Okay, this is also a major discovery. Then Hermann Muller, he discovered radiation causes defects in chromosomes. Okay, he discovered that by irradiating a particular organism with a certain type of radiation causes defects, or you can say changes in the chromosomes. Okay. Then in 1928, Alexander Fleming, and he discovered the antibiotic penicillin. Okay, ये भी आपको पता है. Then Oswald Avery, Colin McLeod, and Maclean McCarty proved in 1944 that DNA carries the genetic material. Up till now, it was thought that the proteins are responsible, because proteins were the biomolecules. They were the heroes at that time. Everyone was thinking that whatever is occurring in the living organism or whatever is occurring in the human body is because of proteins, क्योंकि उनका वो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे. तो सबका फोकस, सबका ध्यान प्रोटीन्स पर था, और इसका ध्यान न्यूक्लिक एसिड्स पर ध्यान नहीं था किसी का. But in 1944, these scientists discovered and they proved that proteins do not carry the genetic material. DNA carries the genetic material, that is deoxyribose nucleic acid. Then in 1953, Watson and Crick, आप अभी भी बोलते हो Watson and Crick model of DNA. Okay, so they discovered and described the 3D model of DNA. ठीक है. Then in 1966, the genetic code of DNA was cracked.
ठीक है। अभी ये आपको द फर्स्ट कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ जीन ऑकर्स इन 1971। अभी तक के जेनेटिक मटेरियल क्या होता है एंड व्हाट इज द जेनेटिक कोड, यानी कि ATGC आप बोलते हो, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, अगर आपको याद हो रहा होगा तो A pairs with T एंड G pairs with C। तो ये जो बेस पेयर्स बोलते हैं उसको, ठीक है, एडेनाइन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन ATGC, ये जो बेस पेयर्स होते हैं, तो अभी तक की इनकी स्टडी चल रही थी कि कैसे उसका जेनेटिक कोड कैसे होता है एंड हाउ दे आर सीक्वेंस्ड। जेनेटिक कोड मतलब हाउ दे आर सीक्वेंस्ड इन अ पर्टिकुलर DNA। And the first complete synthesis of DNA was done in 1971. That means the scientists were successfully capable of synthesizing a gene. Okay. Then in 1973, Stanley Cohen and Herbert Boyer perfected genetic engineering techniques. देखिए अभी जीन्स क्या है समझ में आ गया, जेनेटिक मटेरियल क्या है फिर थोड़े साल के बाद वो समझ में आया, फिर थोड़े साल के बाद उसका सीक्वेंस क्या होता है, हाँ जी, बेस पेयर्स कैसे होते हैं, आप इसको पिरिमिडीन्स और पायरिमिडीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो पिरिडीन्स और पायरिमिडीन्स का कैसे बेस पेयरिंग होता है और एक जीन बनती है, ठीक है, वो समझ में आया। देन लेटर ऑन आफ्टर अ फ्यू इयर्स द साइंटिस्ट वर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग अ पर्टिकुलर जीन। अब देन द नेक्स्ट स्टेप वाज मॉडिफिकेशन, ठीक है। अभी आपको ये तो समझ में आ गया ह्यूमंस को कि हम उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब ये माइंड में आया कि हम अगर उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं तो व्हाट वी कैन डू द मॉडिफिकेशंस, ठीक है। आप तो सक्सेसफुली आपने वो जीन प्रोड्यूस कर दिया, बट नाउ द नेक्स्ट इज वेदर वी कैन यूज दिस मेथड, जो हमको अभी प्रोडक्शन आ गया, जीन सिंथेसाइज करना आ गया, कैन वी यूज दिस फॉर अ सर्टेन बेनिफिट। तो फिर उसमें मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुआ और फिर बायोटेक्नोलॉजी का जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है, ठीक है, एनी मॉडिफिकेशन इन द जेनेटिक मटेरियल और जीन्स was termed as genetic engineering. Okay, so in 1973, Stanley Cohen and Herbert Boyer perfected the genetic engineering techniques. इन्होंने डिस्कवर भी किया और उन्होंने फिर बताया भी कि how you can apply this in, how you can apply genetic engineering techniques to the organisms. Then in 1975, George Kohler and Cesar Milstein developed the technology to produce monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, MAB जो आप बोलते हो, monoclonal antibodies. They produce हाँ, monoclonal antibodies will study in detail क्योंकि आपके इसमें है भी वो included syllabus में. So I'll not discuss it here in detail. We'll discuss it later on when we have that unit. Okay. So in 1975, these scientists, they discovered, they developed the technology to produce monoclonal antibodies. Okay. Then next in 1982, Humulin, that is the first FDA approved human insulin was produced. It was produced in 1982. The first FDA approved human insulin, which was called as Humulin, it was produced in 1982. And this is also a genetically engineered product or a biotechnological product, you can say. Then in 1981, the first transgenic animal was produced. Transgenic animals means transgenic, आप क्या बोल सकते हो, a hybrid between a hybrid variety, you can say. Okay, so it was first developed in 1981. Then in 1983, polymerase chain reaction (PCR) जो आप बोलते हो, that technique was given by Carey Mullis. ठीक है, तो ये भी आपको डिटेल में है, ठीक है, आपके यूनिट 2 या यूनिट 3 में कहीं तो है ये PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आपको इसका डिटेल एक एक स्टेप आपको है इंक्लूडेड सिलेबस में। तो हम जब हम वो आएगा सिलेबस में तब हम वो देखेंगे। अभी विद जस्ट यू कीप इन माइंड दैट दिस term was, this technique was invented in year 1983. Okay, polymerase chain reaction. Then in 1986, first recombinant vaccine was given, that is hepatitis B vaccine. और आज आपको पता है कि hepatitis B vaccine, it is very much used in many patients. Okay, now पहले hepatitis B की vaccine नहीं थी, but now it is there. So the first recombinant vaccine was hepatitis B vaccine, which was produced in 1986. Okay, then also the first anti-cancer drug was produced developed in 1986, that is interferon. Okay, then next is GMO, that is a genetically modified organism. In 1987, virus-resistant tomatoes were produced. ठीक है, the virus couldn't infect these variety of
tomatoes which were genetically modified ones. Okay. Then in 1994, the first GMO product was sold in US, that is tomato puree. Okay. Then in 1997, ये आपको याद होगा अच्छे से, the first cloned animal was from an adult cell, जिसको आप डॉली बोलते हो, ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद होगा. This was the first cloned animal. Okay. Then next in 1998, in the year 1998, human embryonic stem cell lines were established. Okay. अब stem cell lines क्या होते हैं, I'll tell you in detail जब हमको वो उसमें आएगा, ठीक है, हमारे syllabus में. Then in 1999, the Human Genome Project was launched. ठीक है, Human Genome Project. Then next in 2002, draft version of THGP was published. Okay. Then in 2003, severe acute respiratory syndrome SARS virus was sequenced. उसको sequence किया है मतलब it was sequenced, that means its genetic material was studied and its genetic coding, जो उसका genetic का genes का sequence या जो उसके base pairs का sequence होता है, that was स्टडी. तो उसको यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में टर्म होता है इट्स सीक्वेंसिंग वाज डन. दैट मींस इट्स जेनेटिक मटेरियल वाज डिटरमाइंड एंड इट्स जेनेटिक सीक्वेंस यू कैन से वाज एस्टैब्लिश्ड. देन इन 2004 फर्स्ट क्लोन्ड पेट, ठीक है, इन 2004. Then the first recombinant vaccine against human papilloma virus. The first recombinant vaccine was hepatitis B vaccine. Now another type of vaccine against a human papilloma virus, again a recombinant vaccine, was developed in the year 2006. Then again in 2010, malaria resistant mosquitoes. Then many. Okay. So अगर आपको थोड़ा सा बोर हुआ होगा हिस्ट्री, तो थोड़ा सा जाग जाओ. अगर आप सो गए होंगे तो थोड़ा सा उठ जाओ, क्योंकि इट वाज रियली रिक्वायर्ड. क्योंकि जब तक कि आप वो चीज की हिस्ट्री या वो कैसा इवॉल्व हुआ आपको समझ में नहीं आता, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता. दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बताया. एक्चुअली ये जो इसकी हिस्ट्री है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. ओके, ये हम स्किप भी कर सकते थे, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई टुक दिस. ओके, सो दिस वॉज अ ब्रीफ हिस्ट्री. अब जो रिसेंट ब्रेक थ्रूज है, ठीक है, दीज आर द रिसेंट ब्रेक थ्रूज. अब उसमें क्या क्या है, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड इज इम्प्रूव्ड. टारगेटेड कैंसर थेरेपीज, जैसे कि अभी मैंने बताया फर्स्ट एंटी कैंसर ड्रग इंटरफेरॉन वाज डेवलप्ड, तो वैसे ही अभी यहाँ अब मॉडिफिकेशन क्या हुआ, टारगेटेड कैंसर थेरेपीज. स्पेसिफिकली इट विल टारगेट टू अ द कैंसरस सेल. ओके, सो इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, देन टारगेटेड कैंसर थेरेपीज, जीन थेरेपीज, और CRISPR क्या होता है, आई विल टेल यू लेटर ऑन. ओके, सो दीज आर द recent advancements. Then we'll come to the types of biotechnology. Okay, now the types of biotechnology is microbial biotechnology. That means the biotechnology which is related to you can say modification in the microorganisms, or you can say the use where the microorganisms are utilized. Okay, that is a microbial biology. If it is having an agricultural application, it is called as an agricultural biotechnology. Then animal biotechnology, forensic biotechnology, bioremediation, aquatic biotechnology, and medical biotechnology. So these are the different types of biotechnology. आप देखिए बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ही कितना वास्ट है, उसके कितने टाइप्स है, लेकिन आपके सिलेबस में आपको ये सब के डिटेल्स में नहीं जानना है. ओनली you can say the part of either microbial biotechnology or animal biotechnology or forensic biotechnology that is used in production of pharmaceuticals or for higher yield of a fermented product. सिर्फ उतना आपको स्टडी करना है. So this subject is it very vast, and it covers all these fields, that is microbial biotechnology, agricultural, bioremediation, aquatic, animal, forensic, and medical. So jitna jo medical ka part hai, that only will study. We'll just read just one line. I'll not read all this. Microbial biotechnology क्या होता है? It is the manipulation of microorganisms. जैसे मैंने बताया ना, when the biotechnological principles जहाँ पर microorganisms involved है, that is a microbial biotechnology. Generally यहाँ पर yeast और bacteria use होता है, ठीक है? And what are its application to create better enzymes? ठीक है? And also it is used to clone and produce large amounts of important proteins.
So this is microbial biotechnology. Then agricultural biotechnology. यहाँ पर plants, you can say more environmentally friendly, that yield more per acre genetically engineered product. Okay. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया वीट की जो ईल्ड है वो कैसे बढ़ी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी वैरायटी सिंथेसाइज तो नहीं बोलनी चाहिए, एक ऐसी वैरायटी उन्होंने इन्वेंट की दैट विल गिव यू मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स पर एकड़. Then by use of agricultural biotechnology you can also increase the nutritional value of your food also. Okay, that is food with higher proteins and vitamins. Okay. Animal biotechnology, it is considered as animals as a source of medically valuable proteins. Okay, animals are a source of medically valuable proteins, antibodies. Okay, so this is animal biotechnology. Then forensic biotechnology, that is it includes DNA fingerprinting, that is inclusion or exclusion of a person from suspicion. जैसे कि आप जो जनरली सीआईडी में देखते हो फोरेंसिक्स लैब होती है वहाँ पर, तो वो लोग सब वहाँ पर उसको स्टडी करते हैं डिटेल में, तो वैसा कुछ पार्ट है यहाँ पर. ठीक है, एक्चुअली द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इट इज कॉल्ड एज. And generally this is used for identification, you can say identification, or any identification of the culprit or criminal you can say, और जो भी crime scene है वहाँ पर आप बहुत सारी स्टडी कर सकते हो when you utilize the forensic biotechnology and DNA printing. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिमेन्स, इंक्लूजन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम सस्पिशन, देन पेटर्निटी केसेस, एंडेंजर्ड स्पीशीज, and tracking and confirmation of the spread of disease also can be done by use of forensic biotechnology. Then bioremediation. Bioremediation, the use of biotechnology to process and degrade a variety of natural and man-made substances. This is bioremediation. You can say adding the nutrients, this is one example, or you can say application of bioremediation, adding nutrients to stimulate growth of bacteria to clean up the oil spills. यानी कि जो seas वगैरह में oil spills होते हैं, to clean up that you are adding certain nutrients to stimulate a growth of particular bacteria that will eat up the oil that is spilled on the sea. Example is also given, Alcanivorax borcumensis. Then aquatic biotechnology. ठीक है, aquaculture, genetic engineering, bioprospecting. The next comes medical biotechnology. It is involved with the whole spectrum of human medicine, that is preventive medicine, diagnosis of health and illness, treatment of human diseases, and new information from the Human Genome Project, gene therapy, stem cell technologies, each and everything. तो ये सारा आपको study करना है in medical biotechnology. Now, there are certain pros and cons of biotechnology. We'll see what are the pros and cons of biotechnology, and we'll end this lecture today and we'll continue in the next lecture. Okay. So the pros are it can improve the health and reduce hunger simultaneously. It creates flexibility within the food chain. It offers medical advancement opportunities. And it allows us to preserve resources. This is very much important. It helps us minimize waste products, and it can reduce infectious disease rates. It creates, these are the pros. Now, the cons. It creates all or nothing approach. Either you have everything that you want to achieve, or you have nothing. Okay? So it creates an all or nothing approach. This is the disadvantage of biotechnology. And it is a field of research with many unknowns. जैसा कि मैंने आपको उसकी अभी आपको हिस्ट्री में समझ में आया था, आप कुछ ऐसा ईयर 1950s में अगर आप सोचो तो वहाँ जब पूरा ऐसा था ध्यान में कि द प्रोटीन्स आर द जेनेटिक मटेरियल, दे कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सो दिस इज द फील्ड ऑफ रिसर्च विथ मेनी अननोन्स. अभी आज भी हम ये बता रहे कि दिस इज इन्वेंटेड और उसका ये टेक्नोलॉजी है, ये मैकेनिज्म है, फला फला उसका मैकेनिज्म होता है, इस तरीके से ऐसा होता है, बट स्टिल वी हैव during the present era also we have many unknowns, I will say. So this is a field of research with many unknowns. So this is also a con. Then it can be used for destruction. This is very much important. If it is utilized properly, it can be used for human benefit, or it can be used for destruction also. Okay, so this is a disadvantage of biotechnology or the genetic engineering.
and it can also ruin the croplands. On one hand, it can increase the production per acre, or it can increase the yield, and on the other hand, it can ruin the croplands also. Okay. So these are certain pros and cons of biotechnology. Okay. So if any one of you is having any difficulty, they can ask, and I hope everyone, each and every one of you have written P or present in the chat box. We'll have 10 minutes for your difficulty. अगर आपको किसी की कुछ difficulty है, तो we'll discuss. If anyone is having any difficulty, you can ask. Yes, anyone? I hope you have understood the concept, or you can say you have got a brief idea about what is biotechnology and how it evolved. And I hope it was not just reading out the contents on the presentation. I hope you have understood. Say yes or no. Have you understood? Have you got a brief idea about what is biotechnology, how it evolved, and what is the present situation, and what are the recent advancements? Not the entire concept of biotechnology. At least you have got an idea. Which chapter book you said to refer? Was it सत्यनारायण? Yes, सत्यनारायण, जो आपकी बायोकेमिस्ट्री की जैसी होती है ना. यही ऑथर की ज्यादातर, मुझे तो नहीं पता आप लोग क्या रेफर करते थे बायोकेमिस्ट्री के लिए, बट मैं ये रेफर करती थी बायोकेमिस्ट्री के लिए. इसके लिए मैं आपको वो याद दिला रही हूँ कि बायोकेमिस्ट्री की जैसी थी ना वैसे ही कुछ कवर है, बट दिस इज बायोटेक्नोलॉजी. I also have the soft copy for this book. मेरे पास एक्चुअली थी नहीं, बट सम ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास उसने मुझे सेंड किया है. तो इफ यू वांट आई कैन सेंड इन योर ग्रुप आल्सो दिस बुक, बट आई से इट इज बेटर दैट यू टेक द बुक इन दी हैंड एंड स्टडी. ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी आपके पास एन नंबर ऑफ बुक्स के होंगे, लेकिन उसको खोल के आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो आप. और अगर आपने बहुत, आप सिंसियर भी हो, आपने उसको ओपन करके रीड भी किया, आधे घंटे से ज्यादा रीड नहीं करेंगे आप सॉफ्ट कॉपी में. मुझे तो नहीं जमता है सॉफ्ट कॉपी में रीड करना, मुझे आपका नहीं पता, बट आधे घंटे से ज्यादा आप लोग नहीं रीड करोगे सॉफ्ट कॉपी में, आपको फिर वो समझ में नहीं आएगा. और जब आप बुक में से पढ़ते हो ना, उसका एक अलग ही मजा होता है. ठीक है, तो बेटर है कि आप डायरेक्टली बुक्स हाथ में लो और पढ़ो. सॉफ्ट कॉपी है आपके पास, नो डाउट, जब आपको एग्जाम्स के टाइम पे काम आएगी. ठीक है, या अगर आपको ऐसा है तो आप उसका प्रिंट आउट लो, सारी बुक का नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, जिसमें से आप स्टडी कर रहे हो, एटलीस्ट उसका तो भी आप ले लो, प्रिंट ले लो, जेरोक्स ले लो, वट एवर. ठीक है, you keep it with you for your reference, the soft copy of the book, but I'll prefer you study from hard copy. Okay. तो किसी को कुछ डिफिकल्टी है, वी हैव ओनली 3 minutes remaining to end the lecture. So if any one of you is having any difficulty, मैम सॉफ्ट कॉपी भेजो ग्रुप में. ठीक है, I'll send the soft copy of सत्यनारायण, नो प्रॉब्लम. और कुछ? ठीक है, ये तो हुआ पूरा इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी. अभी नेक्स्ट हम जो हमारा एक्चुअल सिलेबस है वो स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, कल से. तभी उसके लिए भी जो यूनिट 1 है उसके लिए अभी सत्यनारायण ही है, और मैं कोई दूसरी बुक रेफर करूँ तो मैं आपको तब के तब बता दूंगी. और कुछ डिफिकल्टी है किसी को? आंटी, आपका लेक्चर चल रहा. हाँ, बैठो. ये कौन है? वो कौन है? आप ही. So if you're not having any difficulty, shall I end the lecture? We'll continue tomorrow. Okay, at I think at 11 we have tomorrow's lecture.
11 to 12. Okay, at 11 a.m. we'll continue. Okay, everyone have written present. Okay, I'll end the lecture. We'll continue tomorrow at 11 a.m. Okay, so thank you very much. Have a nice day. Still someone is writing. हो गया क्या सबका मैसेज करके? Now I'll be saving this as the final attendance. Okay, thank you very much.